अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक एंड टॉक एंड ब्लॉक इंजन सीरीज़। लास्ट एपिसोड में हमें एरर आ रहा था जब हम यहाँ पे पैकेज मैनेजर कंसोल में अपडेट डेटाबेस की कमांड दे रहे थे, नल रेफरेंस एक्सेप्शन का एक एरर आ रहा था। उसकी मेन रीज़न ये थी कि डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बन रहा था जो हम एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करें, और एट द एंड पता ही चला कि ये उस पैकेज में इशू है जो कि यूज़ किया जा रहा है। तो उसका जो हल है वो ये है कि हम अल्टरनेटिव पैकेज यूज़ करें। पहले हम यूज़ कर रहे थे microsoft.data.sqlite.core। सो जो कोर वाला पैकेज है उसके 3.1.10 वर्जन में इशू था, तो हम नॉर्मल microsoft.data.sql पैकेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वो एरर आना ख़त्म हो गया। मैं आपको एक दफ़ा रन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि देखें ये मेरे पास इस लोकेशन में एक db फाइल बन चुकी है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डैश वी लगाते हैं ताकि हर कमांड की डिटेल जो हमारा कंसोल में शो हो रही हो, एक्स्ट्रा डिटेल। तो मैंने एंटर किया तो ये अब एक डेटाबेस बना देगा हमें दोबारा से। देखा, ये इसने डेटाबेस बना दिया यू ब्लॉक के नाम से, ठीक है, और हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। एंड एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने की है वो ये है कि डिज़ाइन टाइम डीबी कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्री मैंने ऐड किया है। ये इस क्लास की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारी कॉन्टेक्स्ट हमारा जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में हो इंस्टेड ऑफ स्टार्टअप प्रोजेक्ट, तो हमें रन टाइम पे, मतलब जब हम एक पैकेज मैनेजर कंसोल से कमांड रन कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट तो रन नहीं हुआ, ठीक है, हम तो कमांड लाइन से डिज़ाइन टाइम पे, सॉरी नॉट रन टाइम, ऑन डिज़ाइन टाइम पे हम वो डेटाबेस क्रिएट करने चाह रहे हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क या तो उस लाइब्रेरी में कॉन्टेक्स्ट को ढूंढेगा, ठीक है, और वो कॉन्टेक्स्ट को कैसे ढूंढता है, अगर आप यहाँ पे मैं दिखा सकूँ कि किस तरह से सर्च करता है, अगर नज़र आ रहा हुआ तो यू कैन सी दैट finding db context classes, next one is finding I design time db context factory implementations, right। तो या तो वो db context class देख रहा होता है, ठीक है, अपने पॉजिटिव प्रोजेक्ट में, ठीक है, क्योंकि हमने ये डायरेक्ट तो db context क्लास नहीं यूज़ की, हमने तो अपनी context क्लास यूज़ की है। तो नेक्स्ट वो क्या करेगा, आई डिज़ाइन टाइम db context फैक्ट्री की इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। बेसिकली ये फैक्ट्री, ये क्लास भी बता रही होती है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, और कौन सा डेटाबेस कनेक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्रोवाइडर कौन सा है, और एट द एंड ये उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। ये हमें तब रिक्वायर्ड है जब हम अपनी कस्टम कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाई हुई है ब्लॉक इंजन डीबी कॉन्टेक्स्ट, जिसने डीबी कॉन्टेक्स्ट को एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो ये वजह है कि इस क्लास, और ना इसको कहीं रेफरेंस देने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो खुद ही हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर खुद ही इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन ढूंढ रहा होता है, सही है। बेसिकली कैसे ढूंढता है कि उसने एक्सटेंड किया हुआ है इस इंटरफेस को, ठीक हो गया। तो ये एक और चेंज था हमारी डाटा लेयर के अंदर। सो फाइनली डाटा लेयर कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स ऐड रेफरेंस of this data layer into our web project and let's see how it works. So for that reason let me add a couple of properties here, and at the end हम ये डिस्कार्ड करने जा रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट रिपोजिटरी को इंजेक्ट नहीं करवाएंगे अपनी वेबसाइट में। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी डाटा लेयर कंप्लीट है और वर्किंग फॉर्म में है। What was the name of the repository? I post repository, and by the way मैंने ये कोड सारा कमिट कर दिया रिपोजिटरी में गिटहब पे, आप चेक इन करके इसको ट्राई कर सकते हैं। एंड मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करें, कमेंट्स में ऐड करें, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। सो हमें
रिपोजिटरी की क्लास चाहिए और यूनिट ऑफ वर्क चाहिए टू save the changes, right? Let me resolve these references, or let's add CTOR and double tap, and let me add their references, unit of work, कुछ टूल्स हैं जो ये बॉयलर प्लेट कोड खुद ही जनरेट करते हैं, लाइक आई थिंक रीशार्पर, बट वो परचेज्ड टूल है, तो फिलहाल मैं उसको अपने यहाँ लोकल सिस्टम पे यूज़ नहीं कर रहा. विल डू दैट लेटर ऑन, बट फिलहाल हम ये बॉयलर प्लेट कोड भी खुद ही लिखेंगे. ओके, लेट्स ट्राई टू ऐड a post into repository. For that reason, let me and let's save this object into the database, and we can do that by calling save changes as async. And let me add a wait here, make it async, and return task of iaction result. राइट, सो इस तरह से हमारी पोस्ट ऐड होगी. बेसिकली हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे डेटाबेस में पोस्ट ऐड हो रही है और हम उसको देख सकते हैं या हम उसको गेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट स्टेप, लेट मी fetch all the posts, and for that reason I will call my post dot get async, and that will be a waitable task. Right, okay, let's give it a try. Although ये हम पोस्ट व्यू में फिलहाल नहीं सेंड कर रहे, so let's add a debug point here, and इसको मैं execute करता हूँ in debug mode, and let's see if we are able to add this post or not. डिबग पॉइंट आ गए इधर, और स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिबग करते हैं. अब देखें, ऑल पोस्ट में एक पोस्ट आ गई है, और जो कि है हमारी जिसका टाइटल 1 है. ऑल्दो ये एंटिटी डाटा टाइप ठीक नहीं है, इट शुड बी स्ट्रिंग जहाँ पे पोस्ट का टाइटल होगा. और इसको अगर हम व्यू से बाहर निकालते हैं तो ये हमारा वही प्रीवियस व्यू आ गया है. अगर हम इसको चेक करना चाहें डीबी को कि डीबी में भी ये पोस्ट ऐड हो गई है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि अपने यूब्लॉग जो हमारी ये क्लास है, इसको मैं ड्रैग करके, सॉरी ड्रैग नहीं पॉसिबल, मैं कनेक्ट करता हूँ एसक्यूएलाइट से, और कनेक्ट करने के बाद मैं इसको लेके जाता हूँ डीबीज यूब्लॉग टेस्ट कनेक्शन. ओके, एंड लेट्स open this database. You can see माइग्रेशन हिस्ट्री बन चुकी है, पोस्ट का टेबल बन चुका है, और पोस्ट को ओपन करके देखेंगे तो ये हमें एक पोस्ट दे रहा है जिसका टाइटल 1 है. ठीक है, व्हाट दैट मीन्स इज कि हम सक्सेसफुली, हमारी डाटा लेयर कनेक्ट हो गई है और उसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया है, और हम उसको रीड और राइट कर सकते हैं.
and this was just for the testing purpose. We are not going to use this way to access our database, right? Basically ये हमारी logic का part है, और that should be in the business logic, right, in the business section, because database access, other third party accesses and data manipulation should all be there in the business logic, right? और हम उस अपनी सर्विस को यहाँ पे इंजेक्ट करके जस्ट एक सर्विस कॉल करेंगे जो कि बैकएंड पे ये वाला सारा काम करेगी. Alright. Another small thing is how we are updating our database. Although development के दौरान तो ये बहुत easy है, कंसोल्स में ओपन करके database पे माइग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन that should not be the case because at the end हमें ये सारा कोड एक जगह पे होस्ट करना है, कहीं पे हमने किसी वेबसाइट पे होस्ट करना है. तो होगा ये कि जैसे ही हम कोड होस्ट करेंगे, अब कमांड लाइन से तो कनेक्ट नहीं हो सकता, उसने तो एग्जीक्यूट होना है. तो ये जो एप्लीकेशन है अपडेट डेटाबेस की, और जो भी माइग्रेशन अप्लाई होंगी, दैट शुड बी थ्रू द कोड, नॉट फ्रॉम द, बिकॉज ये जो डिज़ाइन टाइम एंड है ये तो हमारे डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए है, ठीक है. तो टू मेक श्योर all the migrations are applied, for that reason we need to add some code in the startup. Initially हम startup में ऐड करते हैं, और फर्दर ऑन जब हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे तो कोड रिफैक्टरिंग में इस पीस ऑफ कोड को उठा के हम सर्विस लेयर में मूव कर देंगे. So let's add that piece of code here, and to make sure our migrations are applied as soon as we push that code. And this code only runs when there is any pending migration, so we don't need to worry about duplication. And we need to access app application services, and from there we need to get our registered service scope factory, right, this way. And let's create a scope to make sure after that block our scope get close automatically and all the references are disposed. Let's say var context is equal to service scope dot service provider dot get required service, and from here we will get our block engine db context. As I said, this is not a good place to write this code. We will move that to one of the extensions methods in the infrastructure later on. And let's say if context dot database dot get pending migrations, right, and I think this will be came from entity framework code. So that is also the another reason that to move this code to infrastructure, because we need to tell कि हमारी वेब एप्लीकेशन कौन सा जो है वो ORM यूज़ कर रही है. So from the architecture point of view, website should not need to know about the ORM and the details of data access logic. So that is another reason, and that will came from the link. So हमने चेक कर लिया कि अगर कोई पेंडिंग माइग्रेशन पड़ी हुई है, then go ahead and call context dot database dot migrate. This will make sure that all migrations are applied. So to test this thing, let's delete our database again.
okay, I have deleted one. Right, now it's empty. So ideally जब मैं इसको run करूँ application को तो database should be created automatically, right? No need to run the command from package manager console. और मैं यहाँ से debug point भी हटा देता हूँ because हमने सिर्फ टेस्ट करना है इसको. Alright, you can see that the database has been created. So this is how we automate this creation of database and the application of those migrations, right? Let me add the to do here so that we will move this piece to infrastructure, right? So that we don't forget to move this code. Alright, so the database has been created, auto migration applied, right? So the last thing is कि वो जो entity में हमारे पास title int रह गया इसको हम string करें, ठीक है? To make sure the block title is in the form of string, the content in the form of string, right? So let's add migration, right? And let's name it alter title type. Alright, why it is happening? Okay, so for that reason, string test title, this is more appropriate one. Now let's rerun again. Alter type, so everything went fine. You can see migration has been created. और अगर आप देखें तो डाटा के अंदर रिपोजिटरीज के प्रोजेक्ट में माइग्रेशंस में एक और फाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? And to apply, we this time we will not run the update database command from here. We will just rerun our application. Not supported migration. Okay, so this is you know another downsize effect from using SQLite ORM as an entity framework as ORM for SQLite, because alter operations are not supported in SQLite, right, which is not good. तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि okay, let's delete the database and SQLite as an entity framework के साथ अगर हम SQLite यूज़ कर रहे हैं तो जो सिर्फ एक ड्रॉबैक मुझे नज़र आया वो यही है कि हम ऑल्टर कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते इसमें, जो कि नॉर्मली तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन हमारे इस केस में ज़ाहिर बात है हम ऑल्टर कर रहे हैं तो हमें अपनी माइग्रेशंस डिलीट करनी पड़ेंगी. माइग्रेशंस का फोल्डर मैंने खाली कर दिया और मैं अब दोबारा से एक इनिशियल माइग्रेशन बनाऊंगा, राइट, डन. एंड जस्ट अपने सॉल्यूशन को हम एक दफ़ा रीरन कर लेते हैं टू मेक श्योर दैट ऑल माइग्रेशन आर अप्लाइड फ्रॉम द कोड ऑन द स्टार्टअप. Done. And to make sure that database is created, you can see it has been created, so that's fine.
सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड कि हमने डाटा लेयर कंप्लीट कर ली, उसको टेस्ट कर लिया, माइग्रेशंस एप्लीकेशन का कोर्स स्टार्टअप सीएस में लिख दिया है, और दैट्स ऑल। नेक्स्ट एपिसोड में हम सर्विस लेयर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी बिजनेस में आएगी, और हमारी जो रिपोजिटरी लेयर है वो सर्विस लेयर के अंदर से एक्सेस होगी, और एट द एंड हम अपने कंट्रोलर्स में वो सर्विस लेयर इंजेक्ट करेंगे, और ये सारा जो डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एक्सेस और एनी थर्ड पार्टी एक्सेस लॉजिक है, ये वो सारी की सारी हमारी बिजनेस लेयर में होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, and do let me know about the feedback. If there is any question, do ask in the comment section. See you in the next episode.